हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जैसा कि मेरा ये दूसरा स्ट्रीम है और आज हम विभूति झा जी से मिलने वाले हैं। सॉरी, मैं थोड़ी टायर्ड हूँ बट आई एम सो सॉरी। उनका नाम है विभूति झा जी, जो इंडिया से हैं लेकिन रहते यूएसए में हैं। एंड उनका एक यूएसए जयपुर डायलॉग ये वो होस्ट करते हैं। ही इज़ अ प्राउड सनातनी एंड ही इज़ फ्रॉम बिहार। और ये बहुत ही प्राउड सनातनी है, which I'm going to talk today about Sanatan, about ये आज 2-3 topics है which I'm going to cover. First, we were only going to cover about halal and haram जो चलता है, जो आजकल विवाद में है. And second topic I would want to talk is about जो कल हुआ हमारे JNU University में. So we'll cover up that also. So I'm going to add him to the stream and we would meet Vibhuti Chaji. I'm just adding him. Namaste. Namaste. Can you hear me clear? Yeah, I can hear you clearly. Just one correction, मेरा नाम है विभूति झा, not विभूति झा जी. Okay, Jha ji. Ji is a takalluf hai. Bhai, That's this right. is my way of saying, okay, like Prakash Jha. So, Yes, yes. Ji, I call him also Prakash Jha ji. He also tells me. So, Vibhuti Jha. So, I'll only call you Vibhuti. Very true. That's Very true. Yeah. Very true. तो आप भी बिहार से ही हो, जी हाँ. जैसे प्रकाश झा जी है, वह झा है फ्रॉम बिहार. और प्रकाश जी मेरे परिचित हैं. प्रकाश जी मेरे परिचित हैं. Yeah, even I know him very well. अगर उनको मेरा नाम कहेंगी तो वो अगर ना नहीं बोलेंगे, पहचानने से इनकार नहीं करेंगे वो. अच्छा, because I know him also. I know him since a long time. I mean, बहुत 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 साल पहले से मैं उनको जानती हूँ, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं आए थे. I know him since then. Oh, okay. And, yeah, I know him since then. Anyway, so you all are from Bihar. आप लोग proud Biharis हो. That's So right. Today I would want to start. विभूति जी, आज हम 2 टॉपिक्स लेकर आए हैं. और पहला टॉपिक के पहले तो मुझे ये पूछने दीजिए दैट हाउ दिस यूएसए डायलॉग्स जो यूएसए में चलता है, जो आप होस्ट करते हो, हाउ दिस केम इनटू बीइंग, लाइक यू नो, आप कैसे जुड़े इसके साथ? That's a very nice question because everything that happens for a reason. जी. So I'm doing as yet a Jaipur dialogue on Wednesday with Sanjay Dikshit ji. This started more than a year ago. And so actually the funny thing is that the first show that started was with my brother, Sanjay Jha. Actually, we did the first show, The Clash of Brothers, one BJP, other Congress. And after that, what happened was that Jaipur Dialogue audiences began to like my thoughts, like my presentation, my points of view. And then I became a regular. Sanjay ji said, dedicated the Wednesday 10 p.m. show was earmarked with me. And now we invite other guests as well so that we are co-sharing the entire show. And usi mein ek baat ye bhi shuru hui thi ki I had always said that if we don't define ourselves, if we don't tell our narrative to others, then others define us. And one of the things that we are doing very successfully on Jaipur Dialogue is defining our narrative. The Hindu narrative, the India narrative, and in a rather unabashed way. Truth must be told, and the truth may hurt. But वो कहते हैं संस्कृत का श्लोक है सत्यम उवाच प्रियम उवाच. So we do that, pointing out the bleeding obvious. And उसी में बात चर्चा ये भी शुरू हुई कि in America, for example, what I had noticed that many first generation Indians who came here, this is a very important point which many Indians do not know in India. Many of them came here with $6 or $7 in their pocket. They struggled to make their living here. Why did they come? Not because they hated India, but they just became daring. कि कहीं कुछ और करना है. You know, people always move away from a country like Bihar से. मेरा स्टेट देखिए ना आप. हमारे स्टेट से तो कितने लोग बाहर इंडिया में पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं. Why? Because Bihar has no opportunity. So, you know, that is the entire issue that related to the people who came here. They did not like the socialist system in India, where you had to bribe to get past a stage. And then people were getting admissions. The Indians are qualified people. And that's how it happened. So, India जो आए थे यहाँ पे,
वो हमारे वहाँ एक होता है ना बिहार इंडिया में, गोरा गोरी चमड़ी, गोरा, विदेशी, फॉरेन, फिरंगी, हम उनके मदमस्त रहते हैं। वो गोरा है, वो ऐसा है, लाइक वी ऑल वांट टू बी लाइक देम, अमेरिकन, द ब्रिटिश एंड दिस लाइक दैट एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आने के बाद वो फर्स्ट जनरेशन जो था, they got so deeply involved in making a life and a living that they forgot what made them a Hindu or an Indian, majority of them. As a result of which, the second generation Indians are totally lost. The जी, famous phrase that American born confused desis is a true story, because the second generation Indians parents were very happy कि मेरा बेटा मेरी बेटी अमेरिकन हो गई, अमेरिकन बोलती है, they were very delighted at their acceptance of the American way of life. In जी, the process, they suddenly realized that they themselves were India born confused desis, क्योंकि इंडिया में तो कोई पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी, ना महाभारत, ना अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कुछ पढ़ाते तो थे नहीं हम। जी, तो हम तो अंग्रेजी पढ़ के आए थे, अंग्रेजी कल्चर में डूब के आए थे, और यहाँ आए तो मर्ज हो गए। नाउ व्हेन द फर्स्ट जनरेशन हैज रिटायर्ड, they realize that, oh my God, we are losing our roots. या, And that's how we hit upon the idea that let's do Jaipur Dialogue USA for catering to the Indians in America and Americans in America who want to know about it. So we started that narrative. Of course, it's just picking up. We are not as big as yet, but we have fortunate. We did a sponsorship. Somebody came forward to sponsor our shows, so we are picking up. We are picking up very well. Yeah. जी, दैट्स Can we गुड। do better? Of course, of course. बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं विभूति जी सॉरी मैं अभी अभी थोड़ा-सा ज़बान लड़खड़ा जाती है। एनीवे मैं आज हम वो बात कर रहे थे कि हम हराम और हलाल जो आजकल हमारे यहाँ पर जो शुरू हो गया है और जो आपत्ति है बहुत लोगों को कि क्यों हमें एक सर्टेन लैंग्वेज में लिखना है फॉर व्हाट व्हेन यू आर कैटरिंग टू अस हम हिंदी जानते हैं हम अरबी या उर्दू नहीं जानते हैं सो व्हाई दिस फुल थिंग ये फियाज को क्यों है और किसको खुश करने के लिए और इतना हटी है ये हल्दीराम जी बिकॉज ही डजंट केयर क्योंकि उसने कहीं पर अपना एक वो दिया था ही हैड पुट अ स्टेटमेंट दैट आई डोंट केयर सो व्हाट दिस एग्जैक्टली ये क्या चीज है और ये क्यों हो रहा है ये It's very simple. I remember मैं शारजा में एक बार इंडिया पाकिस्तान वनडे मैच देख रहा था, जी एंड वहाँ पे शोर मच रहा था पाकिस्तानी दर्शक जो थे, व्यूअर्स, जी दे वर शाउटिंग अबाउट इंडियंस, बिकते हैं साले बिकते हैं, दो आने के बिकते हैं। ओह पूरा स्टेडियम was shouting that statement. And there is a background story, but that's not the subject matter of this today. That's one of the reasons that Haldiram is doing, for a few dollars more, for a few pennies more. It's a market thing. It's a money temptation. That so what? If I certify it halal, whether the chura or Haldiram products are Yeah, actually halal or not, nobody knows. Nobody knows. All that you need to do is to put a print on it, right? So that's where the Haldiram owner can afford to say, "I don't care." And the second part of that statement also is disgusting, because Haldiram's stuffs are all over in the US, and yeah, I have stopped buying that ever since I came to know. It's not about spiritual part of it. It's about the strength of character, that what you are doing is wrong, and I'm not going to fulfill and make you money by my submission to your belligerence and stupidity. जी, There is a concept in economics that I have studied which is called demand and supply. Supply जी, हुई, but हम खरीदेंगे नहीं, तो वो supply हटना पड़ेगा उसको. And that's what is important. And this is very critical. There are so many. I was looking up a page of a halal database. जी, Halal database is a website called Halal Sign. Check करिए आप लोग. There जी, is 1,282 entries, including women's hair care. So imagine how can hair care be halal certified
that means there is only one thing. I mean, you know this process very well, and I compliment you for daring to be different, to embrace Sanatani, because you saw the world with your own eyes. Nobody जी had to teach you, right? जी So, आप समझिए इस बात को कि when you have that kind of an insistence on something, when you convert meat eating into a false spiritual exercise, then there is a problem. And all the Indian companies who are participating in this part of halal certification, they are doing it for a few dollars more or a few pennies more, or दो आने के बिक गए वो. नहीं, वो तो 2 आने के बिक गए विभूति जी, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो लिखा हुआ है, जो हलाल हराम है, ये तो सिर्फ़ ये कंट्रीज़ में चलता है जहाँ पर इस्लाम है। लाइक Right. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। Correct. बाकी के जो नेशंस में जहाँ पर ये जाते हैं इनकी चीज़ें, वो हाउ डू दे केयर? दे डोंट केयर They दैट don't वेदर care. इट इज़ हलाल, हराम, ये सब जो इनका Exactly. तमाशा चलता है, दैट दे डोंट केयर। तो यहाँ पर भी यहाँ के लोगों को भी प्लीज़ करने के लिए ये किया जा रहा होगा। दैट It कैन is. आल्सो रीज़न। It is definitely true, because all said and done, in India also there are significant number of Muslims. So there is या a market. जी, I'm not saying don't cater to your market. जी, I'm saying what you are catering to your market, don't sell it to me. Right? So again, it's a very interesting issue. You can see the tyranny of minority operating. That when Haldiram says, I don't care, that means he doesn't care for 80% of the population. या And that's the sad part. I have absolutely no problem. If you're हुँ, marketing and selling in Islamic countries where the halal is a हाँ, requirement, do the certification, but जी, don't give that thuka hua khana to me, because thuk is also an important element of halal process. It's there जी, on the video. I'm not making it up. या My, ऑफ कोर्स, my thing is very simple. Respect my wishes. Just as in America, in all the American restaurants, you also have a non-vegetarian option. You have an option, you या know. But यहाँ पे, in the US meat industry, they don't say it's halal, but they removed that halal certification from here. That's the important part. They removed it because now it doesn't matter. So the non-halal person will not eat a non-halal meat or food, हुँ, but the non-halal guy can eat. ही कैन ईट, या, देयर इज़ नो So प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। yeah. So I believe that those Indians like me and जी, others, you should, you must openly say no more for me. Haldiram, you don't care. I don't give a damn either for your thing, unless and until we insist on it. It is important. जी, Unless and until you insist on it. And that's why I love Vivekanandaji's Avahan to Indians, Hindus: arise, awaken, assert, and act. You have to make a composition of the four A's. And जी, that's what is important. Whether these people respect us or not is a different matter. As of now, as I see it, what pains me more, Praveenji, is the fact that it almost looks like that the Muslims don't give a damn for Sanatanis. They don't care. या, They have not, you try to be nice with people, they don't care. They don't care for our sentiments. And that's what I am unhappy about. I mean, what kind of, we are all humans. सही, As a God given entities, जी, every woman and every man has the same designated body parts performing identical function. जी, And the God is so clever that whether you pray in a mosque, temple, church, or Jehovah's Witness, we all go down on our knees. There's no difference on that. Why impose your will on me? Where is the justification, moral or ethical justification for me? That's the point which is important. They have converted. And I give credit to them in their political ambition, in the Islamic political ambition to dominate everybody. जी, They have been working on it very, very cleverly. And I say, ताली ताली बजाता हूं आपके लिए, लेकिन आपके उस पर में धिक्कार भी है. I applaud you for your sinister designs to do something. At the same time, I deplore you as a human being that you don't care for my sentiments. If you want me to care for your sentiments, it is a two-way traffic. And that यस, is why you are seeing
the uprising that is happening amongst Hindus in India is और नहीं बस और नहीं, जी, as simple as that. And सही कभी बात। ना कभी तो घड़ा भरता है ना. So जी, that's what is important. Yes. जी। मुझे एक बात पूछना है कि आपका डेफिनेशन क्या है अबाउट हिंदू एंड हिंदुत्व? आप इसको कैसे देखते हैं? हिंदू एंड हिंदुत्व ये क्या 2 अलग चीज़ें हैं या ये एक ही का नाम जैसे मतलब ये अभी निकला है नया हिंदुत्व के नाम से मतलब ये बोला जाता है कि ये लोग हिंदुत्व हैं, जो जो हेट फैलाते हैं वो लोग हिंदुत्व हैं। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट एग्ज़ैक्टली इसका मतलब क्या है? हिंदुत्व और हिंदू, ये 2 में क्या फ़र्क है? बड़ा सीधा सा फर्क है. इस बात पे बहुत चर्चा हो चुकी है. जी। And I will share one my feeling on this that was very nicely depicted. There is a depiction of a picture when Rishi Munis are doing prayer or वो home का कर रहे हैं, हवन हुँ, कर हुँ। रहे हैं, खबर, हाँ। and the Danavs and evil were trying हुँ, to disrupt the process of prayers. हुँ, This is an actual pictorial thing. So the people who are doing the puja, havan, and everything else, हुँ, हुँ, they represented Hinduism. But when the evil and the devil came to disrupt the process, then हुँ, Ram and Lakshman were fighting those evil. So those who are fighting to protect the Havan or the Hindus, they are the warriors, यस, right? The warriors are the Hindutva, depict protection of Hindus. Those who fight to protect the Hindus are designated as the Hindutva body, and I have no problem. I'm both. I will fight for my survival, and I will fight for my dharma. So this is a derogatory word जी, to denounce Hindus, because one of the things that we suffer from, that we always react. We have not never been vocal about ourselves, as a result of which other people have been defining us, जी, and that stamp lag gaya hai कि as if we are evil. So this is an important part. There is absolutely no difference. We are just the same, just as Islam and Islamists are both same. Whether जी, their style of doing things may be different, but that's हुँ, all that is there. या टोटली आई एग्री विथ यू दैट इज द सेम थिंग बट ये सिर्फ मतलब एक ये तो शुरू हुआ है हमारे राहुल गांधी जो है ना इनसे शुरू हुआ है और अब ये मतलब अब हर इंसान यही वर्ड यूज करता है अगर कोई भी अपने लिए खड़ा होता है या कोई भी इसके अगेंस्ट कोई चीज के अगेंस्ट जाता है तो फिर वो हिंदुत्व में कहलाता है क्योंकि इसको आरएसएस से जोड़ा जा रहा है इसको बीजेपी के जो गवर्नमेंट है इससे जोड़ा जा रहा है और इसको बहुत अलग तरीके से देखे जा रहा है पर है कुछ नहीं बट इसका बस एक नैरेटिव इन लोगों ने शुरू कर दिया कि हिंदुत्व इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज आर पीपल हु आर जस्ट क्वाइट एंड वेरी सबमिसिव दे वांट दैट टाइप ऑफ पीपल इनको That's right. चाहिए कि लोग चुप रहें और जो होता है वो होने दें बिल्कुल आवाज ना उठाएं और अब ऐसा हो गया कि इंडिया में थोड़ा बहुत अवेकनिंग हो रही है तो ये इनसे देखा नहीं जा रहा है तो कहीं पर इनको एक वो देना था तो इन्होंने अभी ये एक नया नैरेटिव बना के इनके ऊपर दे दिया हमको जिससे हमको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है वैसे भी आपने आप आपने आपने आपको आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, and that fellow. I mean, I'm dare say he's a fellow, because इस he पप्पू जी has कॉल हिम पप्पू जी he has so stooped so low, and जी his falling low is a function of, you may have not heard about it, but I'm telling you, he suffers a major psychological and real suffering in comparison. He doesn't जी have the education capacity, the mind capacity, or the pizzazz of his great grandfather Jawaharlal Nehru, who was Oxford educated, spoke well, was smart, had pedigree of fighting in the freedom struggle, although he is a very controversial character in his own right. And I don't agree with many of his things, but Rahul Gandhi suffers in comparison with his great grandfather. He suffers in comparison with his grandmother, Indira Gandhi, who जी was very smart, who was जी politically savvy. She was very ruthless in doing जी what, and she was politically very alert. जी So, as a result of which, he doesn't have that alertness either. He doesn't have the same personality, charisma, and charm of his father, या Rajiv Gandhi, who spoke very well, intelligently,
Yeah. right? Three things that I will admire Rajiv Gandhi was that in Washington, D.C., he challenged the Khalistanis. You want Khalistan, go to Pakistan. He was the one who gave the call against corruption and middlemen in Congress party in the Mumbai Delhi Congress committee. He gave the call for that. He was the one who brought in Sam Pitroda for telecom revolution in India. So I applaud him for that. But rest of the thing, he also fell into the entire thing. Rahul Gandhi suffers in Yeah. comparison with all three of his ancestors. And yeah. He looks ridiculously silly. उसके मुंह से क्या आवाज निकलती है? I have no idea. But to think of Congress party, accept him as a leader, have no courage to speak up and demand change, makes them look idiotic and silly. That's सही it. बात है। या सही बात है। विभूति जी, आप थोड़ा सा हिंदी का भी प्रयोग कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो बहुत हिंदी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसके पहले मैं खुद भी जब थोड़ा इंग्लिश बोल लेती थी तो ये लोग बोलते थे अंग्रेजी मत बोलो, क्योंकि हिंदी में हमको ज्यादा समझ में आता है। तो आई एम सो Absolutely सॉरी। correct. हमने तो अंग्रेजी भी हिंदी माध्यम में ही पढ़ी है। बिहार में जहाँ हमने हायर सेकेंडरी पास किया था, तो 12वीं क्लास तक हमने हिंदी में ही अंग्रेजी पढ़ी थी। जी जी तो मैं हिंदी में बोलूंगा, डेफिनेटली बोलूंगा। जी जी। मैं एक बात आपसे पूछती हूँ कि क्या हमारा ये जो हमारा देश है, इसमें जातिवाद इतना ज्यादा प्रोमिनेंट एक फैक्टर है? क्या ये एक फैक्टर है जिसने इंडिया को और हमारे हिंदूज को अलग कर दिया एक दूसरे से? बिकॉज जातिवाद एक बहुत ही गंदा, एक इट्स मैं हिंदी में बोलती हूँ कि ये बहुत ही एक रोग की तरह, ये एक बस गया है हर एक। मोस्टली आप अगर देखो, चलो मेट्रो सिटीज में तो इतना नहीं होता है, जितना दूर दराज के जो जो इलाके हैं और जो गांव वगैरह, वहां पर इतना ज्यादा जातिवाद के ऊपर अन्याय होता है या जो भी होता है। तो मैं कहती हूँ, क्या ये एक रीजन भी है कि हिंदू आपस में इतने अलग और टूट से गए हैं, ये यूनिटी नहीं रही है? हिंदू यूनिटी की जहां तक बात है, आपने कहा जाति की बात की है, कास्ट की बात की है। आई सपोज जाति यू आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू कास्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट कास्ट, या सॉरी राइट, सॉरी, राइट, जाति या कास्ट में लिया है। बट अगेन दिस इज अनदर ऑफ आवर फेलिंग। जी वो कहते हैं कि अगर जब तक हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेंगे कि हमारी गलतियां क्या है, तब तक हम में सुधार भी नहीं होगा। जी ये बहुत ही जरूरी चीज है हिंदुओं के लिए। हमने कहाँ गलती की? जी तो हमने जो है, हमारे यहाँ जाति कास्ट तो था नहीं कभी भी। इट इज एन इम्पोजिशन। ये तो विदेशियों का, इंपीरियल का, पावर्स का, पोर्चुगीज ब्रिटिश का इम्पोज किया हुआ है हम पे, जी लादा गया है हम पे। हमारे यहाँ तो वर्ण सिस्टम था। जी हमारे बिहार में जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, नेतरहाट स्कूल, राज्य झारखंड में अब पढ़ता है, तो वहाँ हमारे पास जो था, हमारे दोस्त जो थे जी वो हरिजन थे, ट्राइबल थे, सब थे। जी हमने इन्हीं हाथों से झाड़ू पोछा मारा है, आंगन साफ किए हैं, खाना परोसा है, बर्तन धोया है, टॉयलेट यूरिनल साफ किया है। वो सब किया है हमने अपने हाथों से। और मेरा दोस्त भागलपुर से, प्रीतम हरी नाम था उसका, तो जिसकी माँ हमारे यहाँ उन दिनों हंडा उठाती थी। तो आप ये सोचिए कि कास्ट जो है, ये हम पे लादा गया था ब्रिटिश के थ्रू, और ये हमारी बेवकूफ़ी है। मैं तो इस बात को हमेशा मानता हूं कि जब तक हम हिंदू मशाल लेके न उठेंगे, तब तक न झोपड़ी नहीं जलेगी। जी झोपड़ी को जलाना है, पुराने स्ट्रक्चर को जलाना है, तो अपने ही आप मशाल लगाना पड़ेगा उसको। जी और इसके लिए हमको इस चीज को नष्ट करना है, बिल्कुल नष्ट करना है कि हमारे यहाँ जाति की तो सिस्टम ही नहीं है। इट वॉज वर्ण सिस्टम। जी इतना तो सभी हिंदू जानते हैं कि जी बहुत सारे लेखक, राजा ब्राह्मण नहीं थे, अपर कास्ट नहीं थे। जी ये तो पता है हम लोगों को। हम्म हमने ये छापा कैसे लगा? हमने ये लगने क्यों दिया? मैं तो हमेशा इस बात को मानता हूँ कि बाहर रहते हुए, जैसे 9 साल की उम्र में मैं गया था नेतरहाट, तो वहाँ पे सरकारी स्कूल था जहाँ की पेरेंट्स के इनकम के हिसाब से फी दी जाती थी। जी तो 50% वहाँ जो लोग थे, बच्चे थे, हम लोग बहुत गरीब थे। माय फादर ऑल्सो वॉज ए यूनिवर्सिटी लेक्चरर। 400 रुपए की सैलरी थी उनकी। इट्स अ वेरी हेविली सब्सिडाइज सिस्टम इन बिहार। जी बिहार गवर्नमेंट में मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बिहार में एक ही अच्छा काम हुआ है कि नेतरहाट स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ।
यू नो। तो हम लोग वहां पे, मेरे दोस्त जो थे, मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा रहा हूँ, तो मेरे दोस्त थे, आपको नाम बताता हूँ, रमेश पॉल दयाल मुंजनी, एक्सलेंट फुटबॉल प्लेयर, ग्रेट हॉकी प्लेयर, संथाल था। विल्सन सुनील लकड़ा, राइट जी राइट विंग से फुटबॉल खेलता था। सुधीर गुड़िया, who was a right left wing football player, a wonderful sprinter. विनोद खरकटा, हॉकी का सेंटर हाफ, बड़ा जबरदस्त था। मेरे तो वो दोस्त थे, क्योंकि मैं भी खेलता था। तो सवाल ये उठता है कि हमने, हमारे अंदर ये बिल्कुल भावना ही नहीं थी कि रमेश मुंजनी ऐसा है, वो वैसा है। हम तो जी उस हालात में पैदा हुए हैं, उस हालात से हम गुजरे हैं। एंड I mean, this is a funny story, but I must share this for public या consumption. When I was born in Ranchi, this is a very funny, cute story actually, and I'm paying my tributes to my mother for that. My mother never had enough milk, but the maid servant who was working in our house, she was a Santhal woman, और उसको बहुत दूध होता था। तो एक दिन बड़ी हिम्मत से उसने बड़ी हिम्मत से उसने कहा माय मदर को कि बीवी जी, आपके बेटे को भी मैं अपना दूध पिला दूं क्या? माय मदर सेड, गो अहेड। हाउ नाइस I यस have grown, I have fed on a Santhal woman's milk. That's the mother's milk I had. And then Paro, her name was, she told my mother, देखना तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हट्टा कट्टा होगा। so so the point of the matter is that, was that halal? यस Jati path ke hisab se we could not have done it, right? So that's what life is all about. We have to begin to assert, refuse to accept the halal composition, reject everything, because there is always, हमें हमेशा alternate है। जी भुजिया वहां की नहीं होगी तो कहीं और की भुजिया कहीं लेंगे। और की होगी लेकिन हाँ, होगी बिल्कुल। वो बिल्कुल हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि तू नहीं और सही हमेशा सच होता है। सही बात है सही बात है लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि योर अपब्रिंगिंग मतलब आई वुड से कि आपकी मम्मी जो थी वो वैसा सोच रखती थी Right. बहुत सारे घरों में जो महिलाएं होती है और जो भी होते हैं घर के जो बड़े होते हैं वो वैसा सोच नहीं रखते हैं अब आप एक ऐसे थे कि आपकी मॉम ऐसी थी जो ऐसा सोच रखती थी Right. कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू इमेजिन कि आपके मॉम का जो जो सोचने का जो तरीका था Hmm. वैसा अगर हर एक घर में ऐसा हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे यहाँ कभी कोई ऊंच नीच ये जो दलित है और ये है ये तो पूरा मिट जाएगा अगर ये सोच सबके घरों में आ जाए Correct. मुझे होना तो भी ऐसी चाहिए, होना भी जी चाहिए। That's right. जी जी That's right. तो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ कि जो घर वापसी करते हैं क्या उन लोगों को सपोर्ट और हेल्प मिलता है फ्रॉम एनीवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत लोग घर वापसी करते हैं बहुत मुस्लिम्स भी कर रहे हैं बहुत कैथलिक्स भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मतलब इसको बहुत अच्छा एक स्टेप माना क्योंकि हम तो कोई तलवार के जोर पे नहीं कर रहे हैं या कोई किसी को बुली नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं घर वापसी हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा वो है कि आपको आना है आपको काउंसिल करते हैं और आपको लेके आते हैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है तो आपको क्या लगता है कि क्या हमको सपोर्ट और चलो हम हमारे जैसों की बात करते हैं जो हम जैसे हैं लाइक पीपल लाइक मी या मेरे जैसे दूसरे हैं जो जो हमने अपना धर्म हमारे आइडियोलॉजी छोड़कर हम दूसरे इसमें आए हैं तो व्हाट सपोर्ट एंड व्हाट हेल्प आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दैट मुझे ऐसा लगे कि हाँ मेरे साथ हैं लाइक यू नो दैट रिस्क ऑफ गिविंग अप समथिंग फॉर समथिंग तो आपको क्या लगता है कि कहीं पर सपोर्ट और कहीं पर हमको एक आशा होती है कि हमको गवर्नमेंट हमारा साथ दे हमको सुरक्षित रखें दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स तो आपको I लगता है जी या आपने बात सही कही है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जहां तक है, अगर अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हम्म, इंड्यूसमेंट और थ्रेट जी और टेम्पटेशन से कन्वर्ट करती है, तो जिन जी लोगों की आंखें खुलती हैं बाद में, जी अगर वो वापस अपने धर्म को यू नो आ जाते हैं जी लौटते हैं धर्म में आ जाते हैं, या उसको उसको गले लगाते हैं वापस की, रिटर्न ऑफ द जी प्रोडिगल जो कहते हैं, कि अगर वो वापस आते हैं, तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो है कि सरकार से कुछ मत मांगिए,
आपने बिना सरकार की परमिशन के दूसरे धर्म को अपनाया था। तो आज अगर आप वो धर्म छोड़ के अपने आप में वापस आ रहे हैं, तो अपने घर आ रहे हैं वापस, तो घर आने से डर क्यों? पहले तो अपनी इस बात को गर्व से करिए कि हम वहां गए थे, गलत जगह पे गए, वापस आए, बट उनको आपकी बात शायद ये है कि उनको थ्रेटन किया जाता है। इज दैट? हम्म हम्म तो नहीं, यस। मैं यहाँ पर विभूति जी, मैं आपको एक पूछती हूँ कि बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स के चैनल में देखती हूँ जो बेचारे इतने डरे हुए होते हैं, अपनी आवाज को भी अलग एक अलग उसमें कर लेते हैं, मतलब दे ट्राई टू शो, आई मीन हाइड ऑल द आइडेंटिटीज। तो ये डर मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बिंदास आ गई हूँ, मैं कहाँ अपने अपने जान को डर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात करती हूँ कि जो लोग छोड़ दिया है, एक एक आइडियोलॉजी छोड़ दी है, तो इतने डरे हुए और इतने इतने फियरफुल हैं कि आप अगर कभी भी चैनल्स यूट्यूब पे जाएंगे और आप उनके चैनल देखेंगे, वो बहुत घबराए हुए रहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी बाहर ना आ जाए। तो ये जो फियर है ना। You are right, because इस्लाम में आई थिंक आई हैव नॉट रेड दैट पर्सनली, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो भी धर्म छोड़ता है उसको मार दो। हम्म, And the killer mentality exists in the other faith. So if somebody does leave and come on his own volition, whether converted or reconverted or whatever, doesn't matter, जी they deserve a societal protection. जी पुलिस हर जगह नहीं जा सकती है। जी Even in America, you have to call 911 for help. But 911 आने में भी 10-5 मिनट टाइम लगता है भाई। चलो, आपके Right? इधर तो 5 ही मिनट लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बट इंडिया में तो नहीं होता, उतना सिस्टम उतनी तेज नहीं है। तो देन आपको जो है सामाजिक तौर पे, सामूहिक तौर पे, सामाजिक तौर पे ये लोगों को ये इसमें आभास होना चाहिए कि नहीं, अगर कोई आता है तो उसकी इज्जत करो, उसको प्रोटेक्शन दो। दिस हैज टू बी कम्युनिटी ड्रिवन। हम में एक वीकनेस आ गई, हिंदुओं में एक और भी वीकनेस आ गई है कि हम हर चीज के लिए सरकार पे चले जाते, डिपेंड करते हैं, सरकार करेगी, जी एवरीथिंग मोदी मस्ट डू। हम क्या कर रहे हैं भाई? अब हलाल और हराम का जो हंगामा है, इट्स अ वेरी डेंजरस वन। लेट्स रिवर्ट जी बैक टू द सेम टॉपिक। It's about protection. It's about taking care of things. What will Modi and Amit Shah and BJP do for that? Other than giving a slogan कि भाई वो कह नहीं सकते हैं in the name of equal treatment. वो जी certain groups of people are doing what they want. It's for 80% to say no. यस, वी बॉयकॉट Why दिस। why must government come in that? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह से उन्होंने मीट को स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बना दिया है। It is जी my responsibility, your responsibility, everybody's responsibility. Why halal is being insisted upon? ये थोपा क्यों जा रहा है हमें, लादा क्यों जा रहा है हम पे है? इसके इसके बहुत बहुत जबरदस्त कारण भी है। ये जो कहते नहीं है कि उन्होंने सर्टिफिकेशन बना दी है। जी Certification is made that only Muslims can certify. So you and I are no longer eligible to certify something as halal. यानी कि वो नौकरी भी किसी और को जाएगी। जी Right? This is the dangerous part is that उन्होंने खाने को कल्चरल कर दिया है। Nobody says X food is bad or Y food is worse. लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसको हाइजीन हो गया कैसे? क्या हम और आप देखते नहीं है कैसे वो हलाल करते हैं? जी Is it is देखा। it is it any less brutal? That's the question. I have seen these things happen. That's why I'm saying to you that या अगर हम इस चीज को देखेंगे कि वो क्या है, तो वो भी तो मर्डर है। मर्डर हमने गोली से मार दी या छुरे से मार दिया, मर्डर इज मर्डर। सही How बात can है। you say that this is more justified than that justified? That, या We have to go get up and contest जी the whole हाँ argument of animal cruelty जो बोलते हैं ना, that is a joke. It's a woke joke जो मैं कहता हूँ उसको। It's a जी woke joke, and that we have to completely धज्जियों उड़ा के फेंक देना उसे। That is जी what is important. That you know this is something which is very important. Like उसकी politics हो गई है, उसको religion में बता दिया है। जी That's what every Hindu must resist. If there was ever any word called resistance, and if it mattered, it is for us Hindus to resist imposition, subjugation, और जो ठोक ठोक के मार के हम पे लाद रहे हैं, उसको बोलना है नो।
नो सही मोर। बात। हमें अपनी और लक्ष्मण रेखा बनानी है, इसके अलावा अंदर आप नहीं आ सकते। जी, और एक 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 होना है, मतलब हर चीज कोई और करेगा ये सोच के सभी लोग बैठ जाते हैं कि वो राइट। करेगा, वो करेगा, वो करेगा, और फिर ये बात वहीं पर रह जाती है। लेकिन हम आज अभी जैसे देखते हैं, अभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अभी फिर से लाउड स्पीकर के बारे में इतना ज्यादा विवाद हो रहा है, फिर से आफ्टर 5 इयर्स। 5 इयर्स पहले मुझे याद है सोनू निगम जी ने कहा था, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर उन्होंने फतवा जारी किया था। आई डोंट नो व्हाट नॉनसेंस दैट हैपेंड दैट टाइम, बट आई रिमेंबर एवरीथिंग क्लियरली कि ये सब हुआ था। अब फिर से 5 साल के बाद फिर वहीं पर वो आ गए हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप अजान मत दो, बट यहाँ पर ये है कि आप लाउड स्पीकर मत यूज करो। इसके ऊपर इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, फिर से शुरू हो गया है सेम ओल्ड थिंग। आपको क्या लगता है कि व्हाई दिस, सडनली सम न्यू थिंग लाइक हिजाब? कभी कभी हिजाब, कभी लाउड स्पीकर, कभी कुछ, कभी हलाल, कभी हराम। आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ रोलिंग करता ही रह रहा है। देयर इज समथिंग टू डिबेट, टू टॉक ऑन टीवी पैनल्स पे, हर जगह आप देखते रहो कि यही चर्चाएं चलती रहती है। आउटकम क्या है इसका? अब फिर दब जाएगा, फिर 2-3 साल के बाद फिर उभरेगा। नहीं, ये 2024 ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है भारतीयों के हाँ, लिए, हिंदुओं के लिए। जी, जी, अगर बीजेपी और मोदी जी जी, जीत जाते हैं तो उसका नतीजा बहुत ही अहम होगा भारत के लिए। जी, मैंने 2020 में कहा था इस बात को, आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन टीवी, जी, कि जिस तरह से लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट जी, मार्क्सिस्ट ग्रुप जो हैं, जी, वो इस बात को मान नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी सक्सेसफुल हो गए। जी, और उनको इस बात का डर है कि अगर जी, मोदी जी फिर तीसरे टर्म में आ जाएंगे जी, तो कानूनन तौर पे मोदी जी बहुत कुछ कर डालेंगे फिर, कानून की तरफ। आफ्टर ऑल हम तो डेमोक्रेसी हैं, जी, राइट। आई रिमेम्बर कि एक बार मैं बम्बई से दुबई जा रहा था, तो मेरे बगल में हम्म, एक आईटी का बंदा बैठा था, और बातचीत चल रही थी 2 घंटे के फ्लाइट में। तो उसने कहा कि दुबई कितना बेहतर है, देखिए कैसे वहां सरकार क्या कर रही है, ये कर रही है, वो हम्म, कर रही है। तो मैंने उसको बोला कि तुम क्यों नहीं करते हो बम्बई में? बम्बई को दुबई बना लो भाई, चेन्नई को दुबई बना लो। हम तो इंडिया में कितने सारे दुबई और सिंगापुर जैसे शहर बना सकते हैं, इकोनॉमिक यूनिट बना सकते हैं। तो कहता है हम तो डेमोक्रेसी है ना, हमारे हम तो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि तुम डेमोक्रेसी के नाम पे अपने आप को आप आइज डिक्लेयर कर रहे हो, और उनकी तारीफ कर रहे हो जिनके यहाँ तुम्हें डर के मारे मुंह खोलने से आवाज भी नहीं निकलेगी तुम्हारी। तो उनकी हंटर तुम्हें बर्दाश्त है, अपनी डेमोक्रेसी को नालायकी में डाल दी तुमने। ये सही समस्या बात। है भारत में, जी, कि हम डेमोक्रेसी के नाम पे कमजोर हो गए हैं, जी, और सही बात। डेमोक्रेसी के नाम पे हम अपने आप को निस्थल कर देते हैं। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। We do not know how to make use of the beauty of our system. And that's what I always say, that, you know, you know, what was the exact question that you had in mind that you said? मैंने ये पूछा था कि जैसे लाउड स्पीकर पे अभी फिर हाँ हाँ, विवाद वो शुरू। लाउड स्पीकर वाला। ये जी, ये जो सवाल है, देखिए, हम्म, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट वी इन जयपुर डायलॉग वी कॉल, देव जी ने बड़ा अच्छा कॉइन किया फ्रेज को, पंचमक्कार। तो वो पंचमक्कार जो है, वो इस बात को बनाए रखना चाहते हैं। तो वो जो है 2020 में जब यहाँ पे ट्रंप हार गए, जी, उनको अब इंडिया को हराना है। वहां पे मोदी जी को हिंदुओं का, जो आपने पहले चर्चा की थी ना, कि हम दबे हुए निखट्टू मार खाने वाले हिंदू, सडनली आवाज उठ गई है, उसकी आह्वान हो गया है। हम्म, अगर वो यूनाइट कर जाएगा, वाकई 80% यूनाइट कर जाएगा, तो 20% को चुप होना पड़ेगा। वो लाजमी भी है जी, कि यू कांट डिसग्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ 80% ऑफ द पीपल। सही बात है। तो वो जो है अजान जो है, ये कारवां चलेगा इंडिया में 2024 तक। मोदी, तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी चाहे आर्थिक विकास की पॉलिसीज लाएं, या धार्मिक विकास की पॉलिसी लाएं, या टेक्नोलॉजी लाएं, या लेबर रिफॉर्म करें, इन सब चीजों में एक बात हमेशा होती है कि कोई ना कोई ग्रुप हमेशा ना खुश होता है। वो तो है। चेंज इज सच ए थिंग, change is such a thing that it doesn't favor everybody equally.
जो लेफ्ट, जो पंचमकार है, इनका एक उद्देश्य है कि उस ग्रुप को पकड़ो जो नाखुश है और उसके साथ बवंडर उठाओ। तो मोदी जी पे 3 तरह के प्रहार होने वाले हैं और ये चलता रहेगा। आप देखिए, सबके अंदर एक ही धारा बहती है। वो धारा है माइनॉरिटीज अब्यूज, ह्यूमन राइट्स अब्यूज, and he doesn't care a damn for minorities and scheduled castes and caste base. Well, people forget that Modi ji himself is an OBC. या So, सही। हर एक मुद्दे पे यही होगा, चाहे टिकायत हो या ये हो। और दूसरी बात ये होती है कि हम हिंदुओं में एक बड़ी कमजोरी है कि हम बहुत कंसिडरेशन देते हैं दूसरों को, लोग क्या कहेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूं कि डू मुस्लिम्स थिंक लाइक दैट? They नो are दैट्स killing people. They don't give a damn about what others say. मुझे ये या करना है, मेरा धर्म ये कहता है, मैं करूंगा। करूँगा मैं जी। नहीं कहता हूं कि आप वो वट, बट हमें तो उठना पड़ेगा भाई। हमारे महाभारत और गीता में तो लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षता के लिए तो अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात और भी है, मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे आप वेगन हो, वेजिटेरियन हो या अहिंसा के परम पुजारी हो, जी आपको उस वक्त के लिए तैयार होना पड़ेगा कि जब आपके जी परिवार पे, आपके समुदाय पे, आपके समाज को अगर कोई मारेगा, तो आपको अस्त्र उठाने पड़ेंगे उस वक्त, और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जी। सडनली उठ करके हम ओलंपिक का रेस नहीं लड़ सकते हैं। उसके लिए सही भी है। 4 साल तैयारी करनी पड़ती है, जीते या ना जीते। ये कमिटमेंट होनी है, ये होनी है सारे हिंदुओं में कि अगर लड़ेंगे, उठेंगे, तो फिर हमें लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। सीधा जी उठ के तलवार नहीं भांज सकते हैं। और दूसरा है जी कि हमारे अंदर एक पलायनवाद की कल्चर आ गई है। जी। 10 गुंडे आते हैं, तलवार भांजते हैं, 1,000 हिंदू वहां से निकल जाते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? क्या वो हुआ। 1000 10 को हैंडल नहीं कर सकता? जी आराम से कर सकते हैं, पर वो आराम से। डर, फिर वो डर, डर, डर। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी भी ऐसा हो गया है कि 8 स्टेट्स में ऐसा हो गया है कि हिंदू कम रह गए हैं, माइनॉरिटी में गिने जाते हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। ये डर ही है जो इनको इतना 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 मतलब आई वुड से माजूर, मतलब इतना फ्रजाइल बना देता है, इतना ज्यादा कि ये सोचते भी नहीं है कि हम कर पाएंगे। करेक्ट। उससे पहले ही हार जाते हैं, बस अपना दैट्स राइट। अपना वो दे देते हैं कि भाई हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते आप? आपका देश है, आप लोगों का देश है। क्यों आप इतना डर के आप भाग जा रहे हो? आप भाग रहे हो इसलिए कोई भगा रहा है, आप भागते हो इसीलिए कोई भगाता है। अगर आप डट के खड़े हो जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके तरफ आंख भी उठा के देखे, क्योंकि आपने अगर बिल्कुल सही बात आप कही है। आपने जी बिल्कुल सही बात कही है, और यही चीज मैं कहता हूं कि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी थी चैप्टर 2 भगवत गीता में, जी कि तुम अपना कर्म करो, अपना धर्म निभाओ। तुम्हें जी तुम्हारे चाचा भतीजे वगैरह सब तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम जी उनके लिए चिंता कर रहे हो, तो तुम्हारा धर्म है कि उससे लड़ो। सही राइट? बात तुम्हारा सही शरीर बात जाएगा, आत्मा बनी रहेगी। और ये मजाक की बात नहीं, सच्ची बात है, ऑब्जर्वेशन है कि जो जिहाद के नाम पे अपने आप को उड़ा देते हैं, उनको यही शिक्षा दी जाती है कि तुम्हारी रूह 72 लोगों से मिलेगी ऊपर जाकर, है ना? तुम्हारा शरीर जाएगा लेकिन तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। राइट? जिहाद के नाम पे हम जी भूल गए हमारी शिक्षा, वो अपना रहे हैं और हम भूले जा रहे हैं। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि हम हिंदुओं को अपना टेक्स्ट अब समझना पड़ेगा। जी वीर गति बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। वो जो जी है, मैं इस बात को मान के चलता हूं हमेशा कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? आई विल डाई डाई or somebody will या kill me. But that's the end of my torture. या look at it. Look at it from that point of view. That's the end of my torture. My soul सही will come back in another life form, जी right? And if I'm doing good, why not? So, एब्सोल्युटली halal or haram जो है, it is a game of political will. It's a game of power. It's a game जी of money. It's जी controlling the system. And that we Hindus have to protect ourselves against it. Because आज तक तो ये समस्या नहीं थी, अब क्यों आई है समस्या? अब क्यों आई है ऑल ऑफ अ राइट? सडन, एकदम नई थिंक चीज कुछ थिंक आ गई? अबाउट इट। या, सही बात है। करिए। मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आप तो बाहर रहते हैं, आपके साथ भी आपके बहुत सारे दोस्त, रिलेटिव जो भी होंगे, तो आपके बच्चे किस तरीके से मतलब इंडिया से जुड़े हुए हैं? मैं ये पर्सनली आपको पूछ रही हूँ क्योंकि I don't have many people who are out. I don't know how those people, कैसे
कनेक्शन कैसे कि हम इंडिया से हैं, हम हमारा देश इंडिया है. हाउ डू दे फील द जनरेशन दैट आफ्टर यू एंड योर लाइक मे बी द सेकेंड और थर्ड जनरेशन, ये कैसे कनेक्ट कर पाता है अबाउट आवर हिस्ट्री, अबाउट आवर गीता के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, एवरीथिंग. हाउ डज इट कनेक्ट? You asked me, you said personally, and my personal experience is that when we came here, my जी. son was just about 8 or 9 years of age. जी. And I made a complete change in my own approach. हम्म. And I urge every parent to consider what I did. I'm not saying do what I did. I say जी. consider what I did. I immediately recognized कि मेरा बेटा जो है, मेरे बच्चे जो हम्म. हैं, they are my actual creation, right? जहाँ जी. हमने, they are real creation of mine. The environment, the education, the genetic factor, all has gone from me and my wife and the 7 generations up and down. जी. तो जब मैंने उसको इस माहौल में लाया हुआ है, it is my responsibility to grow with him again. This was my personal decision, परवीन जी. मैं आपको एकदम असली बात बता रहा हूँ. मैंने जी. कहा कि उसको मैं ये करो या ये ना करो, कहने वाला कौन हूँ? जी. I have brought him in American culture and I have to grow up with him as his friend and buddy. And I realized that between parents and children, the most important thing that must always happen is to open the communication channels. सही बात. 100%. या. और कम्युनिकेशन चैनल तब खुलता है कि जब विश्वास हो लोगों के कि मेरा बाप भी, मेरी माँ जो कह रहे हैं वो मेरे हित के लिए जी. है. तो मैंने उसको कहा कि देखो बेटे, स्कूल में जो भी होता हो आके मुझसे बात करो, क्योंकि तुम्हें इंडिया का एनवायरनमेंट छोड़ के तुम अमेरिकन एनवायरनमेंट में आए हो जहाँ की बच्चे बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं लाइफ में. जी. तो मेरे साथ बात करो, चर्चा करो. आई विल जस्ट टेल यू दैट what is good for you, what's not good for you, in my opinion, my experience. जी. That is important. This is very important because I gave him the assurance कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, and I will always say things in my opinion that is good for you. So I gave him an example कि अगर तुम्हें स्कूल में peer pressure हो, सिगरेट मारने का, सुट्टा मारने का, कोकेन लेने का, कुछ भी हो, अपने दोस्तों से सिर्फ इस बात को कहना कि मैंने जी. पहले अपने I have promised my father that my first drink, my first cigarette will be with my father. Yeah, he was totally shocked. He asked me, "Do you mean it?" I said, "Yes, I mean it. I हम्म. mean it because I'm not here to tell you don't do it. हम्म. I'm here to tell you know what it does to you. यस. And you take your decision whether it is good for you or not. Who am I? I will be dead tomorrow, but you will have to take decisions in your life." सही बात. I kept him connected with my own learning. I always told him that be good with people because you never know who is what. I gave him education about never laugh or ridicule somebody's physical contours or the way one looks. They did not ask for it. या. You didn't ask for it. So the question here is that people will say that, you are a modern parent or you are but it is not about modernity. My mother was modern, sixth grade educated woman, was modern way back when I was born. She was not a PhD. It's the mind's thinking. इट्स योर माइंड. या. Yes, it has the mind thinking. So you have to kind of be in the process, involved with him. And I always was involved with him. Always was involved in conversation. मैंने जैसे उसको बताया, तुम लोगों के सामने आज इसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन के लिए मरते थे. तुम्हारे हाथ में इसकी वजह से सारी दुनिया तुम्हारे हाथ में है, आपने सही मुट्ठी बात. में है. बिल्कुल, यू कैन, आप मंगोलिया उलन बतौर में क्या हो रहा है वो भी जान सकते हैं यहाँ पे. पॉइंट इज दैट but it will take you 30 years to have 30 years of experience. सही बात. So use my experience, use me as a resource for ever you get into a situation मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं. Because तुम्हारे parents are the only two people on the planet Earth who want only one thing, and that is you be happy in your life. Call it successful, call it a family life. So I inspired trust and faith in him, and I often talked about Bhagavad Gita, Ramayana. This is the beauty of Ramayana and Mahabharata. Why I urge all people to read Mahabharata and Ramayana. आप
एक नजरअंदाज डालिए उस पे आप, कहीं पे भी महाभारत और रामायण में किसी भी व्यक्ति विशेष पर की आलोचना नहीं की गई है। बिल्कुल नहीं। शकुनी बुरे इंसान थे ये नहीं लिखा है कहीं पे। सबसे बड़ा लेसन ये है कि उस जी तरह के लोग समाज में होते हैं, बट एवरीबडी, वेदर यू आर भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, और एवरीबडी, दे हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। जी। दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सही बात। जी दैट्स व्हाई आई केप्ट इन टच विद हिम। जी। विभूति जी, मैं आपको एक बात पूछ रही हूँ कि बहुत, आपको क्या लगता है, अभी बहुत लोग नाराज भी हैं नरेंद्र जी से, क्योंकि अभी ये एक नया आया है कि यूपीएससी में 10% ऑफ सीट्स विल बी गिवन टू, आई डोंट वांट टू इवन, आपको पता ही है और सभी को पता है। तो इस बात की नाराजगी बहुत लोगों में मैंने देखी है, और बहुत लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि अंत में जाकर ये चीज वहीं पर काम आती है। पढ़ लिख भी लेंगे तो भी जाके ये काम वहीं आएगा जहां पर तबाही होगी। ये काम वहीं आता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सवाल है, इट इज, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। भारत को अगर जी कोई चीज भी बर्बाद करेगा तो वो आरक्षण होगा। चाहे जी। आरक्षण मेरे लिए हो या आरक्षण किसी किसी और के लिए हो, जी आरक्षण के नाम पे भारत बर्बाद हो रहा है। तो किसी एक समुदाय के लिए, किसी एक धर्म के लिए कि हम इनको 10% दे देंगे, व्हाट व्हाट असली में क्या होता है कि उसमें हम इनकॉम्पिटेंस को बढ़ावा देते हैं। जी ये फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है, ये बैकवर्ड थिंकिंग है। तो आई डू नॉट अग्री विद प्राइम मिनिस्टर्स गिविंग रिजर्वेशन टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फॉर एनी जी पर्टिकुलर रीजन। बिकॉज आज एक चीज देखिए आप, ओलंपिक हो या वर्ल्ड कप फुटबॉल हो या वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट हो या पीजीए गोल्फ टूर्नामेंट हो, किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में और आर्मी में, अपने। आर्म फोर्सेस में, आपको, जी आप जहां भी पहुंचते हैं अपने कबीलियत के हिसाब से पहुंचते हैं। जी भारत के इतने सारे स्पोर्ट्समैन ने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता वेरियस गेम्स में, क्या जी। उनको गोल्ड मेडल जाति के नाम पे आता है कि फलाना मुसलमान है उसको एक एक दे ही दो? ये बिल्कुल नहीं। ये हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, दिस इज वन थिंग व्हिच आई टोटली डिसएग्री विद प्राइम मिनिस्टर, बट आई हम्म, अंडरस्टैंड हिज हेल्पलेसनेस, बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स दैट गेट्स इनटू दैट। जिस दिन से मोदी जी ने सबका विकास की चर्चा की है, उस दिन सबका। से वो शिथिल शिथिल हो गए हैं, उनमें कमजोरी सही आ, है। जब तक सबका साथ सबका विश्वास था वो ठीक था, लेकिन जिस दिन से उन्होंने सबका विश्वास डाल दिया है, तब से वो वीक हो गए हैं। क्योंकि नाउ यू आर पैंडरिंग टू एवरी ग्रुप ऑफ पीपल। आई यस। अंडरस्टैंड कि वो 20% है पॉपुलेशन है, उनकी वोट चाहिए, बट वो वोट नहीं देंगे आपको, इस बात को मानिए नहीं आप। देते। नहीं जी देंगे वोट आपको। ये यूपी के इलेक्शन में दिख गया ना सारा कुछ। जी हम लेंगे सारा लेकिन आपको देंगे नहीं कुछ भी। जी और ये जो है, ये हमारी वीकनेस है। दैट इज अ बैड पॉलिटिक्स। आई एम सेइंग, आई हैव बीन सेइंग कि भारत को आरक्षण की नीति नहीं, पराक्रम और परफॉर्मेंस की नीति चाहिए। जी। आज आज तक परमवीर चक्र जाति और धर्म के नाम पे नहीं दी जाती है। सही बात है। परमवीर चक्र उसी को मिलता है जो जिसने बहादुरी दिखाई है जंग में। जी ओलंपिक मेडल उसी को मिलता है जो जीतता है। हारे हुए को उसको भी भगा दो, दे दो एक बार, वो नहीं होता है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। Performance matters, and I have a catchphrase for that. And I will, since all the all the audience is a mature audience, I always say that performance matters in every field of life. बस एवरी फील्ड ऑफ कोर्स। Battlefield, sports field, boardroom and bedroom, everywhere performance matters. या सही बात। Everywhere performance matters. मैं तो लोगों को इस तरह से आह्वान करता हूं कि भैया, कामा सूत्र पढ़ के अगर, इफ आई कुड हैव बिकम अ बेटर लवर, इट वाज सो इजी। Because anything that you want to do, you have to work hard to learn it. How can you be giving reservation? It's a sad thing. Arakshan is destroying the country, and it will destroy the country. I'm afraid about that. वो कहते हैं कि हर चीज से हम बच जाएंगे, लेकिन वो मुझे ले डूबेगा, सही बात वो है। आरक्षण हमें ले डूबेगा।
क्योंकि वही हो इतने रहा है। अच्छे से चल रहा है, मतलब वी आर ऑल सो हैप्पी। हम तो इतने बीजेपी के समर्थक हैं, वी आर सो हैप्पी, बट सडनली समथिंग लाइक दिस कम्स अप एंड वी आर लाइक वी गेट लिटिल लिटिल बिट ऑफ शॉक कि ये कैसे, मतलब व्हाई फॉर व्हाट। एंड फिर उसके ऊपर अगर हमको फिर एक और वीडियो देखने मिलता है जहां पर कोई कहता है कि पढ़ लिख के फिर इसी के लिए काम करो, यही चीज के लिए आपको, करेक्ट। आप अगर तो फिर और शॉक मिलता है कि आर वी गोइंग, व्हाट आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं। राइट। हम ऐसे लोगों के हाथ में चीजें दे रहे हो कि हम खुद उनको दे रहे हो कि हमारी बर्बादी कर लो, लो करो। हमारी एग्जैक्टली, ले एग्जैक्टली, लो। एग्जैक्टली। वो वैसा एक हो जा बात रहा है वहां। एक बात सोचने वाली है, और आई थिंक, आई बिलीव इकोनॉमिक्स का वो टर्म है डिमांड एंड सप्लाई। जी You have to control whichever you are entitled, whatever you are in control of. I'm in जी control of my demand. जी I am not in control of the supply of what is coming. I'm saying the people of India must demand कि ये आरक्षण बंद हो, क्योंकि I'll give you an example. My mother suffered from brain tumor. This is ओ my personal example. But she died eventually. But I was going as much as I'm as many times as I could to be with her. So एक रात की बात है, हॉस्पिटल में बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ ब्लड टेस्ट बीइंग डन, तो उनकी बाएं हाथ में पंक्चर सा हो गया था सारा। So there was a Kerala sister who was very careful in taking the blood out. और रात के 10 बजे उस दिन एक बंदा आया, सफेद कोट पहन के डॉक्टर बन करके आया, and he could not take the blood properly. I then told him कि देखो भैया, my mother is crying and wailing. Sister, whatever her name was, उसको बुला लो. She knows how to do it. You know what was his immediate response to me? हाँ हाँ You upper caste guys think that I'm a scheduled caste, so I can't take the blood. ओ गॉड मैंने उसको कहा कि तुम बेवकूफ हो। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूं। ये अपर कास्ट की बात कहां से आ गई? He was in the reserved category and he could not know how to do that. And if I raise an objection to that, I'm a bad guy. This is what is happening to the country. जी दिवंगत आत्मा रामविलास पासवान जी को मैंने यहां न्यूयॉर्क में कहा था कि आप तो यहां इलाज करवाने आ जाएंगे, इंडिया का क्या होगा? आपके भाई बंधु किसके पास जाएंगे? सही बात मैं है। तो ये कहता हूं, जिसको भी इंजीनियरिंग डिग्री मिली हो, तो बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है ठीक से, जो 40 टक्के पढ़ के पास हो गया है, तो डेफिनेटली ही इज इंफीरियर टू द गाय हु मेड 80% मार्क्स। तो मैं तो कहता हूं कि एमबीबीएस जारी सारी रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, मैं जी उनको नमन करके कहता हूं कि अपनी 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 व्यथा को बताइए लोगों से कि आई एम एमबीबीएस आर सी रिजर्व कैटेगरी, so that then people will decide whether to go for your treatment or not. I'm totally against reservation. I'm against help and support. जी I'm for help and support. I'm जी against reservation. जो सही- पीड़ित हैं, जो कमजोर हैं, उनकी मदद करिए। जी उनको जो है मूर्ति बना के चढ़ा मत दीजिए सर पे कि आओ तुम्हें बन जाओ डॉक्टर। एंड दिस इज सैड पार्ट। उसका जी सैड पार्ट ये होता है कि दे सफर फ्रॉम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए दादागिरी करते हैं फिर। जी This is सही the this is what is called a very strong degenerative element which has which is destroying country, and I'm totally against that. जी। आपको क्या लगता है, आप वहां पर हो, आपको क्या लगता है इंडिया की कैसी छवि है, मतलब एज हिंदूज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ कंट्री, कि यहाँ के लोगों की, हिंदूज की क्या, कैसे, मतलब कैसे देखे जाते हैं, लाइक हाउ डू पर्सन हु स्टेज ओवर देयर, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियंस, कि जो वहां के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनके दिमाग में एक इंडियन कैसा है, एक डरा I हुआ, will, उनके भी दिमाग I में will, वैसा ही है कि ये I डरा will, हुआ है। I will tell you exactly what a senator once told me. जी Okay, we love you Indians as immigrants to this country. These are the exact words of his. We love you Indians as immigrants to the country. You are educated, you are professionals, you work hard, you are in the high median income. You have family values, you take care of your children, you are not a law and order problem anywhere, और तुम हम्म कुछ मांगते ही नहीं हो, and you ask for nothing. So so that, if you go by the 80-20 ratio, 80% immigrants here are Hindus. जी That is the actual impression. जी There, the second impression also runs that we can be taken for granted.
because we don't know how to ask for anything. So जी we are very often taken for granted. We are not a political force. We are not, we have respect. People like us, but they take us for granted. And that's something we are setting right now. जी Because for many years, the first generation Indian was busy growing professionally, making his money, making a living, good living. तो वो सब हो गया है. अब जो है, we are trying to be more active. That's why I'm fighting for election on Republican ticket for New York State Wow, Assembly. that's great. Congratulations. I hope Thank you. best for you. Very nice. अभी मैं आपको ये पूछती हूँ कि आप बिहार से हो, है ना? तो Yeah. आपको क्या लगता है कि पॉलिटिशियंस ने जो स्टेट और लोगों की हालत की है वहां पर, what do you think that Nitish Kumar should do for the upliftment of the states? I'll tell you, half of the questions are from your Twitter only. Yeah? I'll be very frank. Go ahead. Go सी ahead. आई एम सो मैं कितना कितना मतलब बोल भी दे रही हूँ कि मैंने आपके ट्विटर से काफी क्वेश्चंस लिए कि मैंने देखा यू नो द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू गो ऑन ट्विटर टुडे आई वाज टेलिंग माय डॉटर कि व्हेन यू गो ऑन ट्विटर ना यू कम टू नो व्हाट अ पर्सन इज उसका सब कुछ मालूम पड़ जाता है ट्विटर से कि वो क्या सोचता है वो क्या लिखता है वो उसका दिमाग में क्या चलता है ये सब मालूम पड़ जाता है तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन वहीं से उठाया है आपका I'm an open book. तो आप बोलिए. मुझे बताइए कि आपको बिहार में मतलब क्या आपको लगता है बिहार कैन बी इट इज अ वेरी गुड स्टेट बट बहुत सारा लाइक यू नो आपको क्या लगता है कि इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं First of all, बिहार का जो है, I'm as proud a Bihari as I'm a Hindu and as I'm an Indian. Let me tell जी you that. I'm very proud of जी myself, of जी my, I respect my parents for making me who I am. जी That's one thing which I'll tell you definitely. But बिहार को में दिमाग नहीं रह गया है. मैं ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसलिए कह रहा हूँ जी कि 1978-79 से 83 तक मैं आरबीआई में बैंगलोर में काम करता था. So I जी was a direct recruit officer in RBI. जी I joined in 78. वहाँ पे कनिंगम रोड पे आरबीआई की क्वार्टर्स थी, ऑफिसर्स क्वार्टर्स थी. तो वहाँ से मुझे किसी ने फ़ोन किया पूना से. फ़ोन तो नहीं था. पूछा मुझसे, यार एक काम करो, मैं अपने बेटे को रमैया कॉलेज में भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो देख लो जगह असली है कि नहीं है, कितने सारे कैपिटेशन फी दे रहे हैं, जगह असली है कि नहीं है, देख के आओ जरा. आई वेंट देयर. I took my motorcycle and I went to Ramaya College, met the principal. What shocked me, I'm telling you the story of 79-80. 50% of the students in Ramaya College of Art, Science and Commerce, the principal told me, I didn't physically count, they were all from Bihar. they were all sorry From Bihar. okay Now think about it like this. ऐसे ही बिहारी लोग तो दिल्ली जाते ही थे पढ़ने के लिए, आईएएस में जाना है, ये करना है, वो करना है. एक दूसरा माइग्रेशन हुआ जो कि बैंगलोर आया. Bangalore in those days was a beautiful air-conditioned city. जी There were 7 public sector undertakings in in Bangalore. The जी jobs were immediately available. People were passing and staying there. Those people, they paid capitation fee to come to Bangalore. That means money came out and they became non-resident Biharis. बिहार में दिमाग रह नहीं गया. इसलिए the reason why nothing is happening in Bihar is कि काम करने वाले हैं नहीं, सोचने वाला कोई है नहीं, बोलने वाले बहुत हैं बिहार में. इच्छा बहुत है लोगों को कि बिहार सुधरे, वो हमारी भी है. जी बिकॉज वहां पे बिहार में नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है. जी हमारी जो पुश्तैनी जमीन है दरभंगा में, वहां कहते हैं कि अगर आप पानी वो कहते हैं बीज डाल दीजिए, फसल आ जाएगी उसमें. लेकिन बिहार पॉलिटिशियंस हैव सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बिहार, पॉलिटिक्स के नाम पे, कास्ट के नाम पे जी बर्बाद कर दिया है. नीतीश कुमार, इन माय ओपिनियन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नीतीश जी, रिजाइन कर दीजिए. आप छोड़ दीजिए. आपसे 15 साल से कुछ हुआ नहीं, जैसे लल्लू यादव ने 15 साल से कुछ किया नहीं. आप जी लोगों को अब एक वो तो सर पे कफन बांध के चढ़िए कि अब बिहार को हम डेवलप करेंगे, नहीं तो मरेंगे. जब तक वो कफन बांध के न चलेंगे अब, तो बिहार का उत्थान नहीं होगा. एंड बिहार इज सिम्टोमैटिक ऑफ द कंट्री एज अ होल. सो विद्वता है लोगों में. हम बिहारी थोड़े, हम थोड़े फेल कर गए. बिहारी जितने भी बाहर निकले हैं वो सफल है. इसका मतलब है कि वो
वो जी, कहते हैं कि कंडीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट होनी है ना बिहार में, तो जी, वो कंडीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। आज तक नीतीश कुमार क्या अमेरिका आए हैं पैसे मांगने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या उन्होंने क्या किया है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बिहार में? कुछ भी नहीं। तो इंटरनेट, बाय द वे आई मस्ट टेल यू दिस, देयर वर टू हुँ, इंटरनेशनल मिथिला हुँ, हुँ, communities organized seminars, two of them, last year and this year also, कि कैसे उत्थान हो मिथिलांचल का, दरभंगा, नॉर्दर्न हुँ, बिहार साइड। हुँ, हुँ, तो बिहार जो बिहार रह गया है, झारखंड झारखंड हो गया। जी, झारखंड में इतनी मिनरल्स हैं, इतनी रिसोर्सेज हैं, टाटा नगर वहां ही खुला था। जी, लालू यादव ने टाटा नगर को बर्बाद करने की कोशिश की साहब। जिस स्टेट को टाटा स्टील था, वहां से जमशेद टेल को हटाया गया, भगाया गया पॉलिटिक्स की वजह से, टेल को वापस पूना में आया, किसको जी, फायदा हुआ? तो बिहारी इस तरह से सोचे कि दिमाग खत्म हो गया बिहार का। मैं इस खुशी नहीं, मुझे खुश नहीं होते, मैं खुश नहीं हूं इस बात को कहते हुए, लेकिन अब जी, सोचने वाला करने वाला नहीं रह गया बिहार में। वो सब कुछ जाति के नाम पे ही, जाति नहीं, कास्ट के, आई शुडंट से जाति, कास्ट या कास्ट के नाम पे बिहार को बर्बाद कर दिया है। और नीतीश कुमार का एक दोस्त थे जो सीईओ थे किसी कंपनी के, उनके इंजीनियरिंग बैचमेट थे शायद, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके अंदर अपर कास्ट के लिए नफरत है। वो उनका बैचमेट है और दोस्त है, मैं उनका नाम जानता हूं बट नाम नहीं लूंगा। बम्बई में जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अंदर से नफरत करता है। हुँ, नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स में जो भी बोल दें, बोलते बहुत सटीक हैं, कुछ और है, हाँ, करते बिल्कुल नहीं। एक सड़क बन गई, उसी पे बहुत खुश हैं आप। तो बिहार का डेवलपमेंट जो है, कोशिश तो हो रही है, एक होता नहीं है कि कभी कभी कुछ नहीं करते हुए भी बच्चा ग्रो तो करेगा। अगर उसको खाना पीना नहीं भी देंगे तो 5 फुट का बच्चा 6 फुट हो जाएगा, लेकिन बहुत कमजोर होगा। तो जी, बिहार की वो हालत है। जी हाँ, सही बात है। इट्स अनफॉर्चुनेट थिंग, एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग फॉर श्योर, अगर बिहार का प्रोग्रेस ठीक से हुआ, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन एंटायर इंडिया। जी, दैट बेल्ट, द इंडो गैंजेटिक बेल्ट वाज सपोज टू फीड द कंट्री, एंड हम भूखे हैं। और मैं ये भी देखती हूँ विभूति जी कि वहां पर बहुत ब्रेनी लोग हैं, बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल, इतना ब्रेन्स, इतना इतना दिमाग है पढ़ने में। बोलिए कितने लोगों को मैं जानती हूँ जो बिहार से हैं, जो यहाँ पर है, अब वो छोड़ दिए, उन्होंने बिहार छोड़ दिया है, लेकिन दे आर ब्रिलियंट इन स्टडीज, दे आर वेरी गुड इन एवरीथिंग। बट वही मैं कह रही हूँ ना कि जब हम अपने स्टेट में नहीं हैं और हम बाहर हैं, तो वो स्टेट को फिर की जो हालत होती है, और अगर कोई केयर टेकर बराबर नहीं है, तो बट नेचुरल उसका क्या हो होता है, सकता है, उद्धार कुछ होता है, नहीं हो सकता। होता है। सही बात है। सही तो बात। आपने बराबर कहा कि बिहार की वही हालत है, अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी, लाइक इट्स वन ऑफ द एनरिचिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट इज। आप देखिए बिहार की हिस्ट्री देखिए ना, मैं तो यहाँ पे क्या बोलूं आपको, कितना कितना हिस्ट्री है बिहार का। तो वहां पे अगर जो आप तारीफ कर रही हैं हमारे बिहारियों की कि दिमाग है, तो इट्स ए जेनेटिक पासिंग ऑन या फ्रॉम हिस्टोरिकल, फ्रॉम द जी, एरा ऑफ पाटलिपुत्र, मिथिला। जी, सीता तो वहीं की थी, सीता जी सही, तो वहीं की थी, हम तो सीता जी के वंशज हैं। जी सही बात है। तो नो, दिमाग इट्स अ तो होना फैक्ट, चाहिए, इट्स अ होना फैक्ट, चाहिए। बिकॉज मैं खुद वही बहुत मैं लोगों कह को रहा हूँ, बिहार दिमाग खाली हो गया वहां पे, सोचने एक्चुअली। वाले करने वाले हर नहीं। और एक देयर वाज अ जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस इन बिहार, whether it was SN Sinha, SP Singh, जी, you know, Bhagwat Jha Azad or whoever, they did nothing for the state. जी, Each one of them. Of all the people, the worst was the Lalu Yadav. Worst was the Lalu Yadav ji. मुझे तो दुख होता है ये कहते हुए कि उस इस इंसान ने, एक बात बताऊंगा यहाँ पे, आई वांट टू से द लास्ट पॉइंट हियर। आई वाज इन बैंगलोर, बहुत जी, सारे हमारे स्कूल के, नेतरहाट के स्कूल वहाँ पे काम कर रहे थे। तो आई हैड गॉन देयर टू गिव अ टॉक इन वन ऑफ द सीआईआई कन्वेंशन। तो जी, मैंने स्कूल अपने नोवा के बोला कि जो भी हो आके मिलो, हैव डिनर लंच विथ मी। So the whole जी, lot of them came, and everybody's name was Vibhuti Kumar, Parveen Kumar, Pooja Kumar, अच्छा, मिथिलेश कुमार, ये वो सब कुमार, सबका नाम कुमार में एंड हो रहा था। जी, और कोई था अभिषेक अभिनंदन, कोई था, सबके नाम अलग अलग थे ऐसे। तो जी, मैंने पूछा कि व्हाट हैपेंड, व्हाई इज योर नेम हाइडिंग योर ट्रू आइडेंटिटी? दे सेड कि लल्लू यादव जी नेतरहाट को यादवाइज कर रहे थे।
वहां पे उन अच्छा। लोगों ने उन्होंने अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम पे इतना हंगामा मचाया हुआ था कि हम लोग को डर के मारे हमने अपना नाम छोड़ दिया। ओहो। तो विभूति कुमार श्रीवास्तव विभूति बन गए, विभूति नारायण झा विभूति नारायण रह गए। एटलीस्ट अब मेरा कास्ट तो नहीं पता चलेगा, और एटलीस्ट साउथ इंडिया में कोई कहेगा कि वो साउथ इंडियन ही है। दैट इज वेरी सैड आल्सो इन अ वे, आई मीन बहुत। दैट्स व्हाई आई विल नेवर फॉरगिव लल्लू जी एंड हिज जी। बंचज, जिन्होंने एकदम निचोड़ के खा लिया स्टेट को सब। जो सही। मुर्गी का खाना खाता है वो क्या दूसरों को मदद करेगा। जो चारा खाता है वो और क्या करेगा, दूसरी बात, सही बात है। तो मैं आपको ये एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम कांग्रेस से तो छूट गए, मतलब पूरी तरह से, अब तो लगता है अब हम हमें उनसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, फिर वही बात है कि बीजेपी को अब किस चीज का ध्यान रखना चाहिए टू कीप us happy, to keep us, like, we are very proud that we are now in a position where we are looked upon, like, हम हमें वो एक अब वो मिल रहा है जो recognition हमको पहले नहीं मिला, अब वो मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस की जितनी गलतियां हैं अब फिर नहीं दोहरानी चाहिए ना, मतलब बीजेपी को भी एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। पूजा जी आपने बिल्कुल सही बात कही है कि मिस्टेक्स होती हैं, बट सेम मिस्टेक्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड। बार बार नहीं होनी चाहिए, बार सही बार नहीं बात है। होनी चाहिए। अगर आपने कांग्रेस की मिस्टेक से शिक्षा नहीं ली, तो फिर राम भी नहीं बचा पाएंगे आपको। फिर हम डूम हो जाएंगे, हम वी ऑल आर डूम्ड देन। एक्चुअली वी ऑल आर लुकिंग अप टू मोदी जी, हम सब उनकी And तरफ देख रहे I हैं। will say one thing, I have been saying this for a long time. मोदी जी ने 370 35 लगा के हटा के 35 हटा के, जिस वक्त की शेख फारूक अब्दुल्ला और ओवैसी धमकी देते थे मोदी जी को जी। कि आप 100 साल तक इसे नहीं हटा सकते हैं, जी हाँ। मोदी जी ने उसको हटा करके ये दिखा दिया कि उनमें सक्षमता है करने का काम, जी हाँ। जो चीज का, और वो भी कानूनी तौर पे, सही बात है। गोलीबारी से नहीं, मारामारी से नहीं, रशिया की तरह अटैक करके नहीं। नहीं, सही बात है। उन्होंने कानूनी तौर पे किया, ट्रिपल तलाक को हटाया, जी। फार्मर बिल लाया। लेकिन अब जो है मोदी जी को एक काम करना है, जो मैंने कहा है, आज रिपीट करूंगा इस बात को, और आई होप समबडी इज कन्वेइंग द मैसेज टू हिम, आज से लेकर के 2024 तक यू हैव टू फोकस ऑन द यूथ ऑफ इंडिया। दैट्स इट। सही। सब कुछ भूल जाइए अब, समाज सुधार सब कुछ भूल जाइए, जी। but economic focus has to be on the youth of India, because Nandan Nilekani said as many years ago about the demographic dividend of the youth of India. जी। वो demographic dividend जो है, जी। demographic burden नहीं होना चाहिए। उस dividend का पूरा फायदा उठाइए और जी। youth के लिए रास्ता दिखाइए। In that direction, I always say the चक्का दोनों चलता है। मैं youth को ये आह्वान देता हूँ, नौकरी मत ढूंढो यार। चाहे बर्गर बनाने के लिए या एप्पल में काम करने के लिए नौकरी मिल जाती है सबों को। कुछ काम करने के लिए जीवन, इसका उपयोग करें यूथ। उसी जी। नौकरी को बिजनेस बनाइए आप। एक होता है प्लम्बर होता है और प्लम्बिंग का बिजनेस करता है। जी। ये चीज इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप लानी है। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट 2 days ago or 3 days ago Prime Minister Modi extended the innovation program. I think he's on the right direction. The only problem is that he's being pulled by so many other directions. So डायरेक्शंस, you या। sympathize with him. I sympathize with him. I या। empathize with him because I know the pain that he's going through. या। And ये जो है, there is a lobby that is forcing him to give in to things. And there is English में एक कहावत है, extremes drive the middle. जो 10% 5% गुंडा होते हैं वो कहते हैं 45% को मान जाओ नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे, और वो कहते हैं कि ठीक है यार, की फर्क पैदा। वो सही की बात। फर्क पैदा जो पंजाबी में कहते हैं ना, वो हमें बदलना है। हम तुम्हें ये नहीं करने टेकिंग फॉर देंगे। ग्रांटेड, एक्चुअली, हाँ बस ठीक बस है। दैट इज द मेन रीजन। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये बहुत है, चलता है कि हाँ ठीक है, देखेंगे, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। सब देखेंगे। एवरीथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड, हाँ ठीक बस है, क्यों ये ठीक है, यही शब्द हमको कहीं पर डुबा रहा है और दोबारा कुछ नहीं है। बस। यही हमको डुबा रहा है। मैं एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बांग्लादेश से अगर रेफ्यूजीज आते हैं, मतलब हम
अब कितना कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, जितना हो रहा है, जितने हिंदूज के साथ में हो रहा है, जितना सब, इतना मैंने टर्मोइल अपने पूरे इतने जिंदगी में मैंने नहीं देखा जितना अब हो रहा है. We were also like, even if I was born in that ideology, but I have never seen so many things happening at one time. Like, it's become one full, I can't say there is no peace at all. Wherever you see, आपको ऐसा दिखेगा कि बस अशांति अशांति है, रह गई है दुनिया भर में. If you see anywhere, you just see that there is something or the other happening which is against humanity, against this. हमको मैं पूछ रही हूँ कि जैसे यूक्रेन में, जैसे अभी जो लोग सफर करे, और 1 मिलियन रेफ्यूजीज जो सफर कर रहे हैं, और इनके ऊपर कितनी ज्यादा फोकस होते हैं लोग, यानी कितने लोग. तो हमारे यहाँ जब ये सब चीजें होती है तो हमारे ऊपर कोई क्यों नहीं फोकस करता है? हमारे यहाँ कितनी सारी चीजें हो रही है, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं कोई हमारे ऊपर क्यों नहीं ध्यान देता है? दिस इज $1 million क्वेश्चन. इसलिए नहीं देता है क्योंकि हम ही ध्यान नहीं देते. और ये कश्मीर फाइल की कहानी देखिए. कश्मीर फाइल की स्टोरी जो है वो सच्चाई है. इस बात को मैं जानता हूँ, और आई डोंट नीड एनीबॉडी टू टेल मी दैट आई डोंट नो. आई नो इट. द पॉइंट इज, जब कश्मीर फाइल बनी इतने सालों के बाद, जी, शरद पवार क्या कह रहे हैं? सोचिए जरा. तो हमारे खुद के दुश्मन बहुत हैं जो सच्चाई हैंडल नहीं कर सकते. मैंने उसमें एक ट्वीट भी डाला था जी, कि the problem with Kashmir file is that the people who are opposing it, they can't handle the truth, naked truth, because that makes them naked. Yes. That's an important part to bear in mind. हम जो है अपनी कहानी नहीं बनाते हैं. तो आज तुर्कमेनिस्तान है, अर्मीनिया है, जहां जहां भी हुआ, हॉलोकॉस्ट म्यूजियम बना. हिंदुओं की इतनी हत्या हुई, where is the Hindu Holocaust Museum? Yeah. हम, why should I ask America? We don't act. That's our problem. We tell America to take action against Pakistan terrorist activity. What prevents us from declaring Pakistan a terrorist nation? If we don't take our action and we give in to certain theories, for example, religion, freedom of religion, in my personal opinion, I oppose the concept of freedom of religion because it's a political doctrine of the West. ये वेस्टर्न की कहानी है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन is that you have a freedom to religion to convert to my faith because I beat you. So I allow you freedom of religion to convert to my faith. In Sanatana Dharma, whether you do the puja of Kali, Durga, Guruvayur, Ganesh, हमसे किसी ने पूछा था, this would be the last subject thing that I will touch upon. मुझसे किसी ने पूछा था, after my consulting work was over, the CEO of the company asked me, can I ask you a tough question about your faith? I said, please go ahead. He said, why do you have hundreds of gods? So I said, first of all, it's not hundreds, it's thousands. So we have thousands of gods. So he said, why do you need thousands of gods? I said, no, we don't have thousands of gods. We have only one, just as you have. And we also say that God is only one. You call him a different name. So first I told him that just as you have saints and apostles in your faith, you don't call them God. We call them God. Whoever did something beyond human endeavor, they were given a status of a God. I'm 100% sure that 5,000 years later, somebody will call Mahatma Gandhi was a god, Martin Luther King was a god, or Nelson Mandela was a god because they fought oppression. They did something of that kind. So in our faith, and I then gave him an example of the fact that, look, you don't go to the hospital. You don't go to one single doctor for treating all your illness. If you have ENT problem, you have a heart cardiac problem, you have a neuro problem, you go to that specialist. So in our system, I was right or wrong, I was giving the explanation so that he can understand better. So I said, when you go to the hospital, you go to attend to your specific problem. Rest of the doctors are not angry with you that you didn't come to him. For us, we go to a specific God to attend to our specific problem. Shri Ganeshaya Namaha, or Jai Mahalakshmi, Saraswati. We go to different gods and goddesses to
attend to our specific need, and Same. we offer our prayers. We pray to get that. So our temples are like hospitals, home to all gods, and no other god is angry. Does it make sense Same. to you? He said, yeah, it makes sense. I said, just as you will not go to a cardiac surgeon to have your neuro thing checked, Headache or something else. Yeah. or something else. सही. So that's how I've dealt with that. जी. एक बहुत अच्छा मेरे पास आप ही का आपके इधर से ही लाया हुआ एक क्वेश्चन है कि हम बिलियन डॉलर्स दूसरे प्लैनेट में लाइफ ढूंढने पर खर्च करते हैं और जहां जीव है वहां मरने और किलिंग्स पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं. ये कैसी आयरनी है. You only have written it, and I think it is the most, I mean, I'm so impressed with this that I had to read it to you. It is from your Twitter only. क्योंकि सही बात है. देखो हम मर रहे हैं कि वहां पर कौन से जीव है, वहां पर क्या है, वहां पर पानी है, वहां पर ये, हम उसके लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, और जहां पर जीव है वहां पर हम क्या कर रहे हैं. What is happening here? That is the tragedy of human Of beings. human being actually. Yes, it is a सही में. tragedy of human beings. Totally. तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा था, तो मुझे आपको ये आपको ही आपकी चीज आपको दोहरानी थी कि कितना Thank- अच्छे से आपने लिखा है many कि thanks लोग. for looking up my tweets and reading out to me. And that's आई डू दैट एवरी टाइम. very आई एम genuine. वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर. मैं ट्विटर पे हमेशा रहती हूँ. मैं सबके ट्वीट्स पढ़ती रहती हूँ, लेकिन जिसका इंटरव्यू लेना होता है मैं उसके ट्विटर पे जरूर जाती हूँ. क्या बोलते हैं, खोजबीन, खोजने के लिए कि क्या है. ओके, दैट इज देयर. ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए. वैक्स म्यूजियम से पुतिन की स्टैचू का सिर काटकर उसका धड़ ले गए. इंडिया में औरंगजेब के स्टैचू के की अगर हम बात भी करते हैं, मतलब यहाँ पर औरंगजेब को क्या बना के रखा है. वली अल्लाह. वो वली अल्लाह है. Yeah. उसके मजार पे पूजा जाता है. उसके Yes. मजार पे जाके फूल चढ़ाए जाते हैं. जो इतना मतलब हीनियस, जो इतना बड़ा कातिल कहलाया गया इन द नेम ऑफ हिस्ट्री, मतलब हर जगह. तो हम ऐसे लोगों से हम इतने वो होते हैं कि जो, अगर हम ऐसा अगर कुछ करने जाएं, ये लोग में कितनी हिम्मत है, हम में क्यों नहीं है ऐसी हिम्मत. और कहाँ पर हम लैक करते हैं. मुझे लगता है हम हम जैसी मतलब महिलाएं, आई थिंक आर मोर, आई फील आर मोर, व्हाट यू वुड से, वी आर मोर डेयरिंग. I feel we need to go out and do such things. What is happening? Women represent Shakti. Of course. Men have become stupid. Put it that way. जी हाँ. हमने उनको शक्ति दे दी और हम निकट्टू हो गए हैं. So you are right. You are right. I have seen and I have read the tweets of many of you Yeah. who are giving avahan to Hindus to arise. स्वामी विवेकानंद जी की का जो आवाहन है, arise, awaken and assert, he gave it how long ago? Because he saw the trouble that we were in. Yeah. And he gave the आवाहन to arise, awaken and assert. उसमें मैंने चौथा ए अपना डाला है, वो विभूति झा का है. स्वामी विवेकानंद जी के 3 ए, विभूति झा अच्छा. का 1 ए. अच्छा. वो Arise, अभी के लिए बहुत awaken जरूरी है. and act. जी If हाँ, you वो do not अभी के लिए act, तो बहुत ही जरूरी है. सही बात. if you do not act, then nothing matters. Nothing जी else हाँ. matters. मैं आपको ये पूछूंगी कि बड़े इंडियंस कहते हैं कि यूक्रेन को रशिया ने बेवजह अटैक किया है. ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं थी, जबरदस्ती का ये किया है. तो हमारे देश में जितने अटैक्स हुए वो किस वजह से, उसको कौन जस्टिफाई करेगा. उसको कौन कहेगा कि ये अटैक्स भी बेवजह जबरदस्ती किए गए थे. इसका क्यों कोई उल्लेख नहीं मिलता है हमें. क्यों नहीं कोई कहता है कि हाँ हमारे यहाँ भी एक अटैक वहां पर हुआ, तो इट इज फॉर नो रीजन. एंड व्हाट अबाउट द अटैक्स दैट हैपेंड इन आवर कंट्री, जो हमारी इतनी अच्छी कंट्री थी, जो मतलब सबसे I, समृद्ध. I, I can't disagree with you. I agree with you. There's something wrong with our DNA. There is a fabulous lady who keeps tweeting and giving, encouraging and bemoaning and instigating and inciting the Hindus to act. There's something wrong with our DNA. I totally disapprove of us Hindus on 2 matters. I will request all the viewers today, just Google 1941 census of India, and you will find that there were just about 145,000, or America में कहते हैं 145,000.
1,45,000 Englishmen living in India, plus women and children, who ruled us, millions, इतना बड़ा देश, just using imagine. our resources, using our people against us, impoverishing us, हमें ही भिखारी बना के हम पे राज जी, किया और हमने उसे होने दिया. जी, There's something wrong with our DNA. We need सही to बात. fix it. We have to revert back to when India was the golden bird which attracted people to come to India. To come and yeah, सही बात. 26% world trade था without English, right? Without सही बात, Angrezi, without Halal. India सही, was a country that has 26% of the world trade. Why can't we go back to that era? We have to go सही. back into our history, our text, what made us great. We have the formula to become great, and we जी, should do that without hesitation. जी. एक ये और मुझे आपको पूछना है कि जो न्यूयॉर्क में ये साल हुआ है, जो नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, तो मैं तो मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ. मैं इसलिए शॉक्ड हूँ कि अमेरिका जैसी जगह में भी मतलब ये लोग अपना एक यूनिटी एक छाप छोड़ जा रहे हैं हर जगह. इसकी मुझे इसकी लगा वजह है. कि I'll tell you why. America is a country हुँ, that has a lot of victimhood mentality. जी, Racial superiority की जो बात होती है, they did against the blacks. जी, Most of the Americans suffer from the racial discrimination that जी, they did with others. जी, So, if anybody, the Islamic people have made this as a trust issue, as a racial issue. जी. So, as a result of which, those people are taking advantage of the rule of law, asserting it's a political gameplay. Yeah, of course, it is a political. Because But मैंने then, पूछा, I'm asking you, you know that is there anywhere in Sharia they say कि Friday को जुम्मा सड़क पे होगा? Does it say anywhere? So why then? ये सब मनमानी हो रही है, ये कहीं न कहीं व्हाट वो बोलते हैं ना वो पोकिंग एक पोकिंग गेम होता था ना ये पहले. cooking में होता है. दिस इज़ जस्ट दैट, नथिंग एल्स. वो नमाज़ पढ़ना हो छेड़ते अगर रहो, जिस छेड़ते रहो, छेड़ते बस रहो, कुछ ना करते रहो. हाँ, दैट इज़ द थिंग. आई that's it. वुड से इट्स अ पोकिंग गेम, नथिंग एल्स. आई वुड अदरवाइज़ और कोई It's, नाम दे ही it's, नहीं it's, सकती. see, when religion begins to dominate your daily conversation. By the way, Pooja ji, there is a very nice quotation that जी, cataract is the largest cause of human blindness. जी, The second and third rank is always contested between religion and politics. सही At this बात है. time, बहुत से लोग अंधे हो गए धर्म के नाम पे. धर्म भी नहीं, रिलीजन के नाम पे. धर्म तो हिंदू वर्ड है, उसका हमारा अर्थ ही धर्म बहुत अलग है. जी, जी. है. Thank you. सही बात है. मैं एक बात कहती हूँ कि हमारे हिस्ट्री बुक में क्या चेंजेस आनी चाहिए? मेरे पास अभी 2-3 क्वेश्चन्स हैं, बस फिर मैं आपको छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे पता है आपको भी टाइम हो रहा है। लेकिन मैं एक बात जल्दी-जल्दी बताइए कि हिस्ट्री बुक में हमारे क्या चेंजेस आनी चाहिए? क्या हमको इनकी जो व्याख्यान होती रहती है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये बनाया, इन्होंने ये बनाया, इन्होंने ताजमहल बनाया हमारे लिए, जितने जो भी इन्होंने खड़ा किए मज़ार हमारे टेम्पल्स के ऊपर जो इन्होंने खड़े किए अपने वो, तो हमारे टेक्स्ट बुक में हमारी चीज़ें क्यों नहीं है? हमारी वीर गति लोगों की जो वीरता थी या जो भी हमारा जो था, जैसे हमारा टेम्पल्स अबाउट सोमनाथ टेम्पल अबाउट व्हाटएवर हैज़ हैपेंड टू अस, व्हाई दैट थिंग इज़ नॉट, व्हाई वी आर नॉट टीचिंग आवर किड्स दैट इन हिस्ट्री, व्हाट आवर इंडिया हैज़ गॉन थ्रू. The reason is very simple. ये जो बलात्कार हिंदू temples पे हुए हैं, the destructions that जी, have happened, या, somebody is taking advantage of the rule of law, जी, democracy and the rule of law. जी, सबको दिखता है. This is where it is important to remember. वो कौन था बंदा था, लड़का था, कसब कसब अब कसम, कसब. वीडियो पे उसके पिक्चर्स हैं कि he was killing people. But या, in a democratic system, it took 3 years to charge him and prove that he was guilty. Think about यस, it. People take advantage of the rule of law. आज हमारे एक जावेद भाई दोस्त हैं, दिल्ली में रहते हैं, बड़े जी, अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने मुझसे कहा था कि झा साहब, हम तो कानूनी तौर पे आपकी ले लेंगे. हमारे शरिया में तो ये नहीं लिखा है कि हम आपसे मोहब्बत करें. सही हमारी बात, शरिया में तो ये लिखा है कि हम आपको कन्वर्ट करें. अगर आप अपनी डेमोक्रेसी के नाम पे हमसे मोहब्बत करते हैं तो ये आपकी भला है.
See, That's the argument. a big thing, yeah. It's a very big argument. And they say that we'll take advantage of every single law and process to our advantage. That is what we have to remember. Ki, like they say that there is a point you can't allow yourselves to go beyond. That's very See, important. that's very important. That's सही very बात. important. Yeah. नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बाद में ऐड किया है कि जो कल हुआ, जो जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, और जो हमारे अभी जो जितने रामनवमी में जो शोभा यात्रा जाती थी उसके ऊपर जो हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहिए. मतलब दिस इज बिकम लाइक एवरी सेकंड डे समथिंग, समबडी इज गेटिंग हर्ट, समथिंग इज हैपनिंग. कुछ ना कुछ मतलब एक षड्यंत्र है. एक पता था कि यहाँ से जाने वाली है शोभा यात्रा. एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड. They say no, it is not pre-planned. I 100% agree who says that this was pre-planned, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऊपर छत के ऊपर आप पत्थर क्यों जमा करते हो भाई? आप किसके लिए जमा कर रहे हो? और जेएनयू में जो हुआ, ये तो दो एक अलग ही चीजें हैं. जेएनयू का तो अलग ही है, ये एक अलग ही चलता है. ये तो हमारे देश में कुछ अलग ही हो रहा है. So what is this, like what is happening? Everything is pre-planned. They know each and every move of yours, they know, and then they attack. देखिए ऐसा है कि देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे जी जैसे मोदी जी ने काम करना शुरू किया है, ट्रिपल जी तलाक लाया, द वेरी बेसिक्स ऑफ इस्लाम इज अंडर क्वेश्चन राइट नाउ. द वेरी बेसिस. सो आज की तारीख में in this 21st century, if any Muslim says that the concept of 72 virgins is valid and justified, जी he is an idiot. सही बात. If any Muslim says justifies having four wives as a normal social life, they may Yeah. have been true 1,000 years ago. जी There may have been social justifications for doing that, but I'm 100% sure Allah didn't say that. Because Allah, nobody has seen, nobody has believed. So, what is happening right now? Well, I saw the pictures. It was disgusting to see young girls and women throwing stones on the procession from their chat. Aapne baat ki hai. So, when जी people are now threatened for their very existence, believe it or not, I'm telling you this on a first hand basis. The general dislike, I won't use the word hate because I hate nothing, but जी the general dislike for things driven by religious doctrines is rising very sharp. very sharp. Yeah. Is rising very sharp. कभी न कभी पाप का घड़ा भरेगा और भर रहा है. So if you think the law of physics is not going to happen, every action has an equal and opposite reaction. I have to only one thing to say: please open your eyes and don't instigate beyond a point. अपनी हद को समझो, जी नहीं तो जूते पड़ेंगे. जी I'm angry about this. I'm not happy saying this. yeah. सही बात. At a human level, let me put it this way to you: all men and women have God given body parts performing identical function. आज तक किसी के भगवान ने चाइल्ड बर्थ की पीरियड 9 महीने से लेके 6 महीने नहीं कर दी. सही बात है. हम सबों के खून लाल है. हम सही बात. मरते हैं जब दिल की धड़कन बंद होती है तो हम मर जाते हैं. उसके और घुटने टेक के पूजा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, चर्च में भी जाते हैं. What is it about religion that makes you crazy? Like And I've don't you told my think? Muslim friends that at the जी individual level you are a great friend, but I doubt your collective wisdom. सही बात है. This, सही बात. as an investment banker friend of mine asked me, हम्म why is Islam misunderstood in this part of the हम्म world? Standing near Fifth Avenue in Manhattan, I said it's not misunderstood. It's understood exactly the way you are वे conveying. या So कैसे understand करेंगे I हम? asked him this very question. Tell me, you are an MBA, you are a high quality student, you are an analyst, you are an investment banker. Do you believe in the concept of 72 virgins in this 21st century? He was silent for 10 to 15 seconds. And I said, you gave the answer. Your Yes. silence is the answer. That even you, educated man, can't openly say, absolutely not. It had to come from you. Absolutely not. That's the Yes. joke. सही बात. Exactly, That that's is the joke. So now
Now we are living in a very different era. People Same. get to know everything. People know the shlokas. People know the all the hadiths and everything else. So Everything you is out open. everything is out in the open. Knowledge is free. Free. अब मुझे आपके मुल्ला से और मेरे पंडित से मुझे एक भगवत गीता और हाँ, नहीं सीखना, मैं तो सीख नहीं जाता, सीख पाए। आई कैन सही रीड बात। माई सेल्फ. Yes. थैंक यू वेरी So मच. I would say that Sanatan Dharma is the only thing I feel in the end will bring peace to this world. That's what I feel. That's what you believe in, I think, and that's what we all hope for. And we all, actually are waiting for the day. Maybe not we, but our generation, जो आगे वो होगा कि यही चीज है जो दुनिया में पीस लाएगा, and that is Sanatan. Do you agree? And I I totally agree. agree. I have said this with Sanjay Dikshit ji, and to everybody I have said this in the past, that जी, science and technology is the biggest support of Sanatan Dharma. जी, Sanatan Dharma is not about the world is a family. That's a wrong interpretation. जी, Kutumb is not family, is a जी, community. जी, We have to also correct that. And as Prime Minister Modi said when he inaugurated the International Solar Alliance, one sun, one earth, one grid. This is the modern definition of Sanatan Dharma. I thank Prime Minister Modi for that. And I say this to the rest of the world. जी, Islam, the sun has no religion, moon has no religion, water has no religion, ether has no religion, air has no religion. सही बात है। Right? What are we fighting for? What are we fighting It is for? time for world to recognize that, Same, as science and technology has evolved, religion has its base in ignorance and fear. We same. all now know that men Yes, are responsible for gender determination of a child. We जी, know women are not responsible for gender determination of child. yes, We know that thunder and lightning doesn't happen because gods are angry. yes. Science is in favor of Sanatan, and that's what the organized religion is concerned about. And Same that's why बात they want to destroy us. है। It is a Yes, Milli Bhagat of, unfortunate reality that when President Biden said, we will go by science, I'm very happy. सही बात है, Science, that's right. सही बात है। Pulse. Science. Absolutely, absolutely. And undoubtedly, what you said, I also believe in that. And this was a very nice discussion. And thank you so much for joining me. बहुत 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 आभार कि आप आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की. And thank you so much. And फिर कभी when I have some other good topic, I will, because you only do on Wednesdays, no? So you are free other days, I think. So you can join me. अब कुछ और हो जाएगा, कोई और नई चीज हो जाएगी तो फिर मिलेंगे. Then फिर I will let you read another 100 tweets of mine, then you can come up with some topics. that is also okay. So keep on tweeting and retweeting fast, fast, so that I can call you again. Thank Thank you you very so much much. for having me. Thank you very Thank you much so to all much. your audiences for their active participation. Great. Thank you so Thank you very much. much. God bless Yeah. you. God bless God you. bless you too. Yeah. Thank you. तो आज हमने अच्छी अच्छी बातें की और हमने बहुत कुछ जाना और हम ये टॉपिक पे हम लोग कितनी बार ये बात करते हैं, समझाते हैं लोगों को, ये समझाते हैं कि भाई अभी जाग जाओ, अभी हम, वरना हमको यहाँ पर मतलब आके बार-बार ये कहना, ठीक है मैं अलग-अलग टॉपिक्स करती हूँ, मैं अभी पॉलिटिक्स भी करती हूँ, पहले मैं सिर्फ सनातन करती थी, बट आई वुड वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड इवन इन दिस फुल जो फियास्को, जो इतना कंफ्यूजन हमारे कंट्री में हो रहा है, इससे सही में मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत एंजाइटी होती है when I see TV and when I see panelists, I get so irritated. मतलब it plays with my brain because they talk nonsense and they वो जो बातें ऐसी करते हैं जो मुझे बहुत एंजाइटी देती है कि मतलब how can you not answer them, how you can listen to all this that is happening, चाहे वो हिजाब का हो, चाहे वो कोई भी चीज का हो, जिस तरीके से अभी भी हो रहा है, जेएनयू में हुआ, जिस तरीके से रामनवमी में हुआ, आई वुड हैव ब्लास्टेड इफ आई वाज ओवर देयर, बिलीव मी. आई आई वुड मेक देम shut their mouths if I was on that panel. So I want every person to be daring and to to look them into the eyes and give them answers. That's what I aim for. दैट इज व्हाट मैं हमेशा आप लोगों को बोलती. सॉरी, ये विभूति झा जी के साथ में मेरा भी इंग्लिश ही शुरू हो गया है. एनीवे, थैंक यू सो मच आरटी जी फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड यू मस्ट हैव सीन आवर
हमारा डिस्कशन आपने देखा होगा। कल का मैं बता देती हूँ, कल 8 बजे हमारे साथ डॉक्टर प्रीति निगम जी जुड़ने वाली हैं, जो हमें एकादशी के बारे में बताएंगी। बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट आई ऑलवेज वांटेड टू कवर, कि एकादशी, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा एकादशी एवरी 15 डेज रखते हैं, फिर एक निर्जल एकादशी आता है, फिर कोई और एकादशी, देयर आर लॉट ऑफ एकादशीज दैट आर हैपनिंग। और आपको अगर जानना हो तो शी इज द बेस्ट पर्सन टू नो फ्रॉम, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वेद एंड जैसा उन्होंने बताया वो रोज उपनिषद भी पढ़ती हैं। तो कल हम उनसे मिलेंगे 8 बजे, जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। ये तो रोज रात को ही मैं बोलती हूँ आप लोगों को। और कल प्लीज 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 जुड़िएगा साथ में, ठीक है? कल 8 बजे मैं आपको जरूर मिलूंगी। और आप लोग ने मुझे 2 बार झेला, एक बार नहीं 2 बार, सॉरी फॉर दैट। एक बार तो मैं ऑलरेडी मधु किश्वर जी से 6 बजे मेरा था, और एक अभी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट और शुभ रात्रि। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। आप लोग भी सो जाइए, आप लोग ने बहुत मेरी बड़बड़ सुन ली है। आप लोग को बहुत अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि इतना आपका सर दुख गया होगा ना मेरी बातें सुन सुनकर। आई एम जस्ट किडिंग, मैं ऐसी कोई बात नहीं करती हूँ, आई वाज जस्ट जोकिंग, ठीक है?